The first one is from the perspective of content creation. The brand team needs to create their content which appeals to Gen Alpha. Our young kids जो iPads पे हैं वो जियो तो नहीं देख रहे, I don't think. नहीं, वो iPad पे नहीं है. The agencies have had to think कि यार मैं 5 सेकंड में क्या कहूँ, and the brand manager has to think कि मैं अपनी स्टोरी 5 सेकंड में या 7 सेकंड में कंप्लीट कैसे करूँ. हम आज भी इन्फ्लुएंसर को ब्रांड नहीं समझते. We as a nation also need to graduate. We don't value their time the way we should. We don't consider them as a brand. But how did you, so how do you bring that into an agency? Isn't that like a freelance model? So I was the lazy bugger who chose to go into an agency because competition ही नहीं है. कोई बंदा MIT से पढ़ के पाकिस्तान वापस आए, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी नहीं करेगा. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by ProPakistani. We're still in Karachi shooting our very last podcast and we have a very, very big guest. Raihan Merchant is the CEO of Z2C. He's the chairman of Brainchild. He's chairman of Blitz, man behind Coke Studio. He was working on the PSL, so many different things, theater as well. So media empire of sorts. Thank you so much, sir, for being on the podcast. My pleasure. My pleasure. Thank you for inviting me. So let's start with what we were just talking about off air, and I think that's we'll come into your journey and a lot of other things. Where we are right now, content creation is changing. Abhi jis tarah hamari baat ho rahi thi, it's also getting a little confusing. जिस तरह agencies हैं, agencies में retainers slash हो रहे हैं, budgets कम होते जा रहे हैं, दोनों साइड्स खुश नहीं हैं. सो दी ब्रांड साइड इज़ लाइक हमें कुछ नया नहीं मिल रहा, हमें ROI नहीं मिल रहा, एंड यू नो दी एजेंसी साइड इज़ लाइक यार आप हमारे बजट्स काटी जा रहे हो. तो ऑफकोर्स उससे क्या होता है कि मैं बेहतर रिसोर्सेज नहीं रख पा रहा, द क्वालिटी ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री इज फॉलोइंग. व्हाट इज सॉर्ट ऑफ गोइंग ऑन एंड व्हाट नीड्स टू चेंज? So there are 3 answers to this question. The first one is from the perspective of content creation. Right? Now, when you talk about content creation, you're talking about it from 2 different perspectives, right? One perspective is me being a creator. I discovered a new way of reducing my weight, right? So I create this plan. I create that content and people start following it. That's one perspective of content creation. Okay? The second perspective of content creation comes from the brand side. Advertising, which is something that we've known for the last, 100 years? What is the ad? It is a content that a brand creates, right? So today, if the brand continues to create the same type of content that they created 15 years ago, whereas their audience, which is Gen Alpha, has moved on, right? Then who are you talking to? Right? So the brand team needs to create their content which appeals to Gen Alpha, right? अच्छा, अब वो उनके लिए कौन क्रिएट करेगा? सो द टीम्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर उनको भी नहीं पता या अगर उन्हें पता है और वो कन्विंस नहीं कर पा रहे ऑन द ब्रांड साइड कि यार योर कंटेंट कांट बी लाइक दिस, यू कांट क्रिएट अ 30 सेकंड कमर्शियल एनी मोर. बिल्कुल. यू कैन नॉट गो टू स्पेन एंड शूट एन एड इन अ कासा. बिल्कुल. और बैंकॉक और व्हाटएवर. या So if your consumer wants a different kind of content to buy your product, and you're not creating that, or the agency is not suggesting that content, then there is something amiss in this entire space, right? And which is what we are kind of missing. So the second answer to your question is, as agency owners or as agency managers,
how many of us are investing? I'm not saying the client pays the cost of my team or through the revenue that they give me or the fee that they give me. I'm saying invest, regardless of whether they pay or not. How many agency owners have invested in their teams to say, यार तुम्हें ये content बनाना आता है, सीखो, I'll pay for it. How many people have done that? How many people in the client organizations, large or small, are actually training their teams to adapt their product strategy or their distribution strategy to appeal to this new generation, right? So हम आज भी टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और इश्तिहार चलाते हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्प्रे एंड प्रे, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, बिल्कुल राइट? हमें नहीं पता कि इसमें से, और ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, विच 50% ऑफ माई एडवर्टाइजिंग वर्क्स, राइट? आई नो हाफ ऑफ माई एडवर्टाइजिंग वर्क्स, आई डोंट नो विच हाफ, राइट? सो वो क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्ट कि रिजल्ट चेंज हो जाएगा, तो वो नहीं होगा. एंड इसी इंडस्ट्री को अगर देखें तो फॉर एग्जांपल आपने बात की कि एडवर्टाइजर्स नीड टू चेंज एंड दे नीड टू ब्रिंग अ न्यू वे इनटू इट. उसमें फिर क्या करें वो? मतलब मिसाल के तौर पे आपने बात की ट्रेनिंग की, राइट? सो ट्रेनिंग, यू टेक योर टीम, यू इन्वेस्ट इन सॉर्ट ऑफ HR, यू टेल देम कि यार अच्छा लर्न दिस, लर्न हाउ टू डू दिस. इज द प्रॉब्लम कि द ब्रांड साइड इज नॉट open to such ideas? Is the problem that the advertisers are just not reinvesting enough? Or is it also just a question of, मिसाल के तौर पे आपने भी बात की टीवी पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, आप जेन अल्फा कितनी टीवी देख रही है, ये भी तो सवाल है ना. आई नो टीवी की रेटिंग्स बहुत है पाकिस्तान में, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन एक सर्टेन ऑडियंस की है ना. आर यंग किड्स जो आईपैड्स पे हैं वो जियो तो नहीं देख रहे, आई डोंट थिंक. नहीं, वो आईपैड पे नहीं है, सॉरी, ठीक है. सो मैं वहाँ आपको इसीलिए रोक रहा हूँ. यूट्यूब ये कहता है कि मेरे पाकिस्तान में कोई 75 मिलियन कस्टमर्स हैं या 80 मिलियन कस्टमर्स, बिटवीन दैट नंबर, ठीक है. आपके ख्याल में आपके घर में जो आपकी दादी है या नानी है, वो या अम्मा है, वो क्या कंटेंट यूट्यूब पे कंज्यूम करते हैं? नहीं करते, ठीक है. उनका प्राइमरी मीडियम टेलीविजन. बिल्कुल. तो फिर ये 78 मिलियन लोग कहाँ से आए? ये वो लोग हैं जिनके पास या तो टीवी सेट नहीं है, स्मार्टफोन, ठीक है, या उनके पास टीवी सेट की एक्सेस नहीं है, राइट? सो इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग इन द लिविंग रूम इन द इवनिंग with your parents, you are the last person who will get access to the remote. बिल्कुल. Right? So you have the option of walking into your own bedroom with your own TV. But if you are an SAC B or a C, you don't have that option. So वो क्या करता है? वो बच्चा YouTube पे जाके अपने मोबाइल फोन पे कंटेंट कंज्यूम करता है, वहां से वो 80 मिलियन का नंबर आ रहा है. अच्छा, उस 80 मिलियन के नंबर को जो आप कंटेंट दे रहे हैं, उसकी मोनेटाइज, उस कंटेंट के पैसे कौन दे रहा है? जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, उस कंटेंट के पैसे एडवर्टाइजिंग के थ्रू आ रहे हैं. वो एडवर्टाइजिंग क्या है? वो भी सारे ब्रांड्स ही हैं. सो इट्स द सेम. अच्छा, व्हाट इज द प्रोग्रेशन? कि जी पहले हम 30 सेकंड का इश्तिहार बनाते थे, 30 सेकंड का इश्तिहार यूट्यूब पे स्किपेबल है. बिल्कुल. तो अब तो छोटा इश्तिहार बनाना पड़ेगा, 5 सेकंड का. सो वो प्रोग्रेशन आ गई, लेकिन बन अब भी. सो द एजेंसीज हैव हैड टू थिंक कि यार मैं 5 सेकंड में क्या कहूं, एंड द ब्रांड मैनेजर हैज टू थिंक कि मैं अपनी स्टोरी 5 सेकंड में या 7 सेकंड में कंप्लीट कैसे करूं. And will we have to evolve to a point where
ऑलमोस्ट डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग. सो डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग का मेरा मतलब इस केस में ये है कि अभी हम बात कर रहे थे, इश्तिहार देखा, इमार बनाता था दुबई में, बड़े मशहूर उस ज़माने में, फॉर डिफरेंट जो उनके प्रोजेक्ट चलते रहते थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस तरह पाकिस्तान में रियल इस्टेट के एड्स होते हैं. और कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है. मिसाल के तौर पे जब वो एक रेस्टोरेंट के बारे में सोचते हैं तो डू दे गो टू देयर फेवरेट फूड ब्लॉगर एंड रिव्यू उसकी सुन के जाते हैं, या डू दे वॉच अ कमर्शियल जिसमें खूबसूरत लोग बैठे मिसाल के तौर पे कॉफ़ी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं. इज आर कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड चेंजिंग? Yes. And what has that led to? Right? So जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, उसी को मैं कनेक्ट करता हूँ. राइट? अच्छा, चूंकि मैं अपने ब्रांड की पोजिशनिंग को 7 सेकंड में स्टोरी टेलिंग ही नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? सो मैं उसके बाद इन्फ्लुएंसर से बात करवाऊंगा. अच्छा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लुएंसर जब ब्रांड से रिलेटेड मैसेजेस देना शुरू करेगा तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी नीचे आ जाएगी. बिल्कुल. तो फिर वो क्या करेगा? फिर इन्फ्लुएंसर और ब्रांड मैनेजर माइक्रो ब्रांड्स क्रिएट करेंगे, वेयर यू विल सी माइकल जॉर्डन शूज कमिंग आउट ऑफ नाइकी, विच यू विल बाय नॉट बिकॉज ऑफ नाइकी, बिल्कुल, बट बिकॉज ऑफ माइकल जॉर्डन. राइट? यू विल हैव Himani Herbals launching perfume brands and skincare brands with influencers. Right? So local level पे भी ये हो रहा है. So that's your next level of evolution कि मैं उस 5 से 7 सेकंड से अगर स्टोरी को एक्सपैंड करने जा रहा हूँ, me as a brand owner has to give something. Because otherwise मैं ब्रांड बेच नहीं सकूंगा. So what am I giving? I am giving my brand's positioning as and pulling it back as a sub brand and using the influencer बिल्कुल, as a major brand. And we've seen this in sports through the years. Nike, for example, and Reebok and all have done this. Even influencer. Look at your perfume advertising globally. कौन से परफ्यूम के इश्तिहार में अब एक नॉर्मल हंक होता है जो परफ्यूम बेच रहा होता है? कोई ना कोई सेलिब्रिटी जरूर होगा. बिल्कुल, बिल्कुल. राइट? सो वो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग माइक्रो ब्रांड्स and leveraging the influencers following. और ये पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल आपने इन्फ्लुएंसर्स की भी बात की या जनरली सेलिब्रिटीज़ की बात की, हो गया रहा है कि वो भी कंटेंट शुरू में आया, इट वाज न्यू, यूनिक, इट वाज फन, लोगों को मज़ा आया, फिर एकदम से वो भी जिस तरह आपने कहा बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करना शुरू हो गया. नाउ दे हैव टू मूव टुवर्ड्स ब्रांड्स. तो ये तो एक चलें सिस्टम मेक्स कंप्लीट सेंस, हम दुनिया में देख रहे हैं, प्राइम फॉर एग्जांपल, सो मैनी थिंग्स. अब लेट्स टॉक अबाउट द सॉर्ट ऑफ मॉडल ऑफ हाउ दे मेक मनी फ्रॉम देयर कंटेंट. राइट? एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि दुनिया विल मूव टुवर्ड्स प्रीमियम कंटेंट, कि बस सब कुछ फ्री होगा, इंटरनेट भी फ्री होगा, कंटेंट भी फ्री होगा, और एडवर्टाइजर जाने कि मेरी आई बॉल्स की ये वैल्यू है. एंड दिस सॉर्ट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम मेटा रियली, कि माई टाइम इज योर वैल्यू. राइट? And but then there's the sort of OTT angle that you're seeing, Patreon that you're seeing. So you're seeing two schools of thought. एक ये है कि मेरे पास एक पब्लिशर है, अगर मैं कंटेंट इतना अच्छा बनाऊंगा ना तो लोग मुझे 500 रुपये महीने के देंगे पढ़ने के लिए. एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि कोई भी पैसे कभी वापस नहीं देगा, इट्स अ रेस नाउ फॉर एडवर्टाइजर मनी, और आपने क्या करना है कि एडवर्टाइजर के पैसे लानी है और उसकी और आई बॉल्स इंक्रीज करनी है. व्हाट स्कूल ऑफ थॉट डू यू थिंक इज राइट? देखो, देयर इज नो right or wrong in this, because ये भी evolution है. So let's say मैं freemium पे काम कर रहा हूँ, and on meta products, let's forget about anything else, let's talk about meta products, which is where the influencer space started. Yes. Right? And I've been creating content, and I have, let's say, 100,000 followers or 75,000 followers, which is not micro. Well, yeah, because it's larger than that, but it's not major either. Right? So I don't have 1 million followers. Yeah. So I fall into what is referred to as a long tail of content creators. Right? ठीक है. वैसे for our audience, can you explain what long tail, as in it's the end of
जी बेसिकली बड़े वाले तो ही हैं, छोटे So वाले you have people like, so you have people like Taylor Swift, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, who are at the top of of the this, pyramid. and it's a pyramid, Yeah. right? So जो long tail है हमारी, वो जो bottom large end of this the triangle pyramid. है, उसके अंदर ये सारे लोग फॉल करते हैं, ठीक है? अच्छा, जब आप एडवर्टाइजिंग के ऊपर कॉन्वर्सेशन करना शुरू करेंगे तो वो जब तक एडवर्टाइजिंग ट्रिकल होके नीचे तक आएगी, क्योंकि लाख लोगों को टच करने के लिए आई नीड टू, एंड इफ माई ऑडियंस इज लेट्स से 200 million people or 150 million people, and if I'm breaking it down into pockets of 75, 80, 90,000, then I need to create 200 campaigns, right? So उस लॉन्ग टेल में आपकी बारी कब आएगी? And if you as a content creator feel that you are creating more or doing more value with your content, and you don't want to wait for this advertising to fall on your content. Plus, when it falls, a large chunk of this money, the platform takes away. Right? Between 40 and 50, 60%, 55%. So then you will choose as a content creator, if you are smart enough or if you are an innovator, to go to something like Patreon, or you will create your own web space, because Patreon is also a route to creating your own web space. बिल्कुल. So वो जर्नी है. अब उस जर्नी में मैं कोई एक पोजीशन ले लूं और मैं कहूँगा यार कंटेंट क्रिएटर को सिर्फ एडवर्टाइजिंग से मोनेटाइजेशन चाहिए, या कंटेंट क्रिएटर को सिर्फ कंज्यूमर से मोनेटाइजेशन चाहिए सब्सक्रिप्शन की या बाइंग के फॉर्म में, ये साथ साथ चलेगा, ठीक है? और ये जर्नी एक हर कंटेंट क्रिएटर के लिए, वो किस तरह से इस जर्नी पे मूव करता है. देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है एज एन एजेंसी, राइट? हम आज भी इन्फ्लुएंसर को ब्रांड नहीं समझते. हम ब्रांड को ब्रांड समझते हैं. हम कहते हैं जी ये इसका पानी है, इसकी चाय है, इसकी कॉफ़ी है, राइट, इसका मसाला है. लेकिन हमने इन इन्फ्लुएंसर्स को कभी ब्रांड बनाने की कोशिश नहीं की या ब्रांड समझने की कोशिश नहीं की. ठीक है, आप यहाँ से उठें और बॉर्डर क्रॉस करके बराबर वाले मुल्क में चले जाएं. अगर वहाँ का कोई सेलिब्रिटी 1 घंटे के लिए किसी की मेहंदी में या ढोलकी में जाता है ना, तो उसके 5 करोड़ रुपए चार्ज करता है वो अपीयरेंस फी. ठीक है, हमारे यहाँ कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ये देखकर पैसे मांगने शुरू किए, लोगों ने बुलाना बंद कर दिया. ठीक है, या अगर बुलाते थे उसके बाद भी तो उन्होंने कहा यार तुम सिर्फ इसलिए आओगे और कुछ नहीं करोगे. राइट, सो वी एज अ नेशन ऑल्सो नीड टू ग्रेजुएट. We don't value their time the way we should. We don't consider them as a brand. Okay, why don't we consider them as a brand? Because they've never positioned themselves as a brand. Bilkul, because I was going to say the same thing doesn't apply, say, for cricketers or for actors and musicians. There is a difference. मतलब मिसाल के तौर पे we are mentally more okay with हानी यार, let's say XYZ फवाद खान है, I don't know, शाहिद अफरीदी है, उनकी टाइम की X वैल्यू हम sort of, तो वो ब्रांड बन गया ना, वो ब्रांड तो दे देंगे. राइट, सो दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग, कि जब वो ब्रांड बन जाएगा तो वो क्या करेगा. राइट, सो अब मुझे नहीं पता कि अभी भी वो हो रहा है या नहीं हो रहा, बट आई रिमेंबर अतीका हैड लॉन्च्ड अ स्किन केयर प्रोडक्ट ब्रांड सम इयर्स अगो. ठीक है, मुझे नहीं पता इफ शी इज कंटिन्यूइंग विद दैट और नॉट, बट दैट वाज एन इन्फ्लुएंसर क्रिएटिंग अ ब्रांड. राइट, एंड इट कुड हैव गॉन miles. I don't know where it is because I haven't seen it, I haven't heard of it. Right? Achha, why am I talking about it? Because this was an example of how an influencer could leverage their position and create a brand for themselves and use that to take their influencer base forward, their audience base forward. Right? अभी किसी और ने भी आई थिंक इसी तरह का कोई स्किन केयर ब्रांड लॉन्च किया है, और वो किसी they've done it with one of the companies, right? But that's how you take that thought process for.
अब at some point that influencer might turn around and start charging. So मतलब मैं पानी खरीद के पीता हूँ ना, so मैं अगर कोई डाइट प्लान है या कोई एक्सरसाइज रिजीम है जो उस इन्फ्लुएंसर ने यूज़ की है, या कोई खाने की रेसिपी है, सो मैं उसी को फॉलो करूंगा. इफ आई हैव टू पे फॉर इट, देन यस, इफ आई एम बाइंग समथिंग आई विल पे फॉर इट. सो द प्रोडक्ट हैज टू बी प्रीमियम इनफ फॉर द कंज्यूमर टू से आई वांट टू बाय इट, मेक दैट डिसीजन. बट व्हाट हैपेंस, देखिए जिस तरह पुराने ज़माने में, या पुराने ज़माने में नहीं, खैर अभी तक पाकिस्तान में ऐसे होता है, देयर वाज द रोल ऑफ लेट्स से द एजेंट फॉर स्पोर्ट्समैन, देयर वाज द रोल फॉर देयर वाज डिफरेंट रोल्स, राइट. उससे क्या होता था कि कंटेंट क्रिएटर बेस्ट चीज़ जो जानता है इस कंटेंट क्रिएशन, राइट. वो उनकी बिजनेस नाउस कितनी है, ये अब हर बंदे की नहीं होती. देयर आर सर्टेन पीपल हु जस्ट हैव इट ऑल, यू नो, एंड दे यूजुअली राइज टू द टॉप. You can argue that of certain athletes, you can argue that of certain... Shah Rukh Khan, for example, don't know him, lekin he must have a ridiculous business acumen the way he's sort of positioned himself his whole life. But that's not natural, right? What happened? Do these people need that level of guidance? Is that supposed to come from the advertising agency? Are there supposed to be agencies in that, or do the brands guide them? मुझे एक बात बताओ. You run an agency as a business also. Yes. Right? Yes. You look at marketing companies as your first set of customers. Right? लेकिन अगर किसी स्टेज पे वो एग्जॉस्ट हो गया, then you'll have to start looking elsewhere, right? बिल्कुल. And you'll have to think कि यार, can I go and pitch my services to Shahid Afridi? What is, and then you start thinking, okay, if I do, what is the value that I add? How can I generate, what is the product that he has? Time. What can I do with his time to generate more value? And you create a solution, and then you go pitch to Shahid and say, this is what I can do. Let's assume for a second that Shahid is too cocky to turn around and say, bugger off. Okay, fine. Let's go to Babar Azam. Let's go to Bilal Maqsood. Let's go to somebody else. Right? किसी को तो समझ आएगी. But then you are creating a new category. Right? अभी जब हम शुरू कर रहे थे ये conversation, तो आपने कहा जी PSL. अच्छा, PSL एक इवेंट था. बिल्कुल. और वो हमारे पास इसलिए आया क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसेस था, उस प्रोसेस में वो पैसे ही नहीं मिल रहे थे PCB को जिससे वो अपने एक्सपेंसेस भी कवर कर सकते. सो दे केम एंड सेड वी नीड 3 times the amount of what has been put on the table. And it's a 3-year right. Now, we had the vision or the foresight or whatever you want to call it, and we were prepared to take that risk. So we did that. And the rest is history. So where I'm going is कि हम as a new product कितना initiative लेते हैं as an agency. कि हम customer कहाँ से पकड़ के लाएंगे. अच्छा, वो कस्टमर लाने के लिए या मुझे अपना टाइम लगाना पड़ेगा या मुझे अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि यार बिजनेस बिल्ड कैसे करोगे. बिल्कुल. हाउ मेनी ऑफ आवर एजेंसीज और हाउ मेनी ऑफ आवर कंपनीज इन दिस बिजनेस डू एनुअल रिव्यूज? फॉरगेट क्वार्टरली, डू एनुअल रिव्यूज, राइट? कि भाई मेरी कौन सी टीम थे, उसने क्या बिजनेस किया, कितना ओवरहेड का कंट्रीब्यूशन उसको गया, कितना रेवेन्यू उसने जनरेट किया, कौन से कस्टमर्स आए, कौन से कस्टमर्स गए, प्रोडक्ट्स उसने क्या की. हम वो तो these are things which lead you to those decisions. Look, it's all about time, where you spend or focus your time on. The more you focus on these things, on business processes, with the objective कि यार मुझे अपनी टीम को ट्रेन करना है. आज भूल जाओ कि मैं अगले 5 साल तक 25% का प्रॉफिट बनाने वाला हूँ. भूल जाओ.
and just reinvest that money into training people to build that product and then watch the result. Right? So when you speak with me about how did I create what you see today, it's exactly that. Right? The day you start thinking, okay, there is only so much that I can, and there is only so much of the money that I make that I'll be able to spend. Right? So if you figure that out, then you say, okay, this is where I stop. Yeah. So you've created a finite base for yourself. The rest of it can go back to the team. Yeah. And that leads to, because then they are focusing on what will we create. And that is that how it peace starts of mind happening, as well. right? Yeah. So now let's move forward. So हमने इन्फ्लुएंसर का स्पेस डिस्कवर किया, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमने वो इन्वेस्टमेंट की और अब हम उस इन्फ्लुएंसर के स्पेस को एनलार्ज करने जा रहे हैं. अच्छा, उस इन्फ्लुएंसर के स्पेस को बड़ा करने में अगर हमने 2-3 अच्छे ब्रांड्स क्रिएट कर दिए, देन इट विल बिकम एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ. बिल्कुल बिल्कुल. सो वो प्रोसेस क्या 6 महीने में हो जाएगा? नहीं होगा. It'll take 2-3 years, right? So it's also about being patient. बिल्कुल. लेकिन सर इसमें so there's the element of the business owner, right? Whether that's in publications or that's in media or that's in advertising, जो भी है, right? वो लोग तो it's a self-correcting business as well. Either they'll go out of business eventually because they didn't innovate, और इस तरह की हिस्ट्री में कितने केसेस हैं, or they'll find a way because उनके लिए bottom line is their life and they have to reinvest in it. अच्छा, ये तो एक साइड होगी ना. अब what of the people in creatives? अगर if you were to speak, a lot of our audience or a lot of people in general are not business owners. अच्छा, अब there's this whole threat of AI stuff, and अभी जिस तरह आपने खुद कहा कि यार agencies को completely tear this apart and start again वाली बात है, and you will have the odd let's say 10, 20, 30 visionary agencies and publications who will do that. A lot of other people are stuck in a job, right? उनका क्या होगा? मतलब लेट्स से मैं वीडियोस बनाता हूँ एट अ हाई लेवल, मैं टीवीसीज क्रिएट करता हूँ 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की, बैंकॉक जाके जो भी, या मैं एक डिज़ाइनर हूँ जो XYZ क्रिएट कर रहा है, कॉपी राइटर एंड सो ऑन. व्हाट हैपेंस टू दिस होल इंडस्ट्री ऑफ जॉब्स? यार, why don't you look at the flip side of it? Okay. So अगर मिड जर्नी की वजह से किसी डिजाइनर को ये लग रहा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, राइट? सो मिड जर्नी में वो इमेज कहां से आया? इंटरनेट से. नहीं, इंटरनेट पे कहां से आया? उसने खुद जनरेट किया. ठीक है, सम ह्यूमन took a camera of some sort, took an image, or sat down on a machine and created a design element. वो तो कंप्यूटर ने खुद नहीं जनरेट किया ना. ठीक है. सो अगर आप मुझसे AI की बात कर रहे हैं और आप उसको क्रिएटिव के प्रोसेस से डिफाइन कर रहे हैं, मुझे ये बता दें कि यार अगर AI इतना इम्पोर्टेंट है तो कौन सी करंट कैंपेन ऐसी चल रही है, छोटी या बड़ी, दुनिया में जिसका कैप्शन AI ने दिया था और वो आपको याद रह गई? नहीं है अभी. ठीक है. सो सम ऑफ दीज baseline elements will still have to be done by the humans. So that's one, right? Second, मैं डिजाइनर हूं या मैं राइटर हूं या मैं डायरेक्टर हूं, पहले मेरे पास जो कस्टमर्स थे वो सिर्फ पाकिस्तान में थे, लेकिन आज मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं अपनी प्रोफाइल अपवर्क पे जाके अपलोड कर दूं और मैं चेकोस्लोवाकिया से काम उठा लूं, राइट? वो भी तो एक ऑप्शन अवेलेबल है. बिल्कुल. इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड नाउ एंड इट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? सो दिस इज अगेन अनदर बिजनेस मॉडल. From an individual perspective, a career route, and from a company's perspective, a directional model.
right? We've done that. We have a team of people in the creative space and in the media space who don't work on clients in Pakistan. Achha. But how did you, so how do you bring that into an agency? Isn't that like a freelance model? You can say that, right? हमारी अच्छा इन लोगों की जर्नी क्या है? इन लोगों की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है. ये हमारे साथ आके काम करना शुरू करते हैं और हमें ये पता होता है कि ये दूसरे या तीसरे महीने में इन्होंने अपना सीवी उठा के बाहर डालना शुरू कर दिया. अपवर्क पे फ्रीलांस पे. हाँ. अच्छा, उसके साथ उन्हें लेट्स से कोई नौकरी ऑफर कर देता है किसी एजेंसी में, जर्मनी में या फ्रांस में या स्पेन में, तो यहाँ से रिज़ाइन करते हैं, वहाँ चले जाते हैं. अच्छा, वहाँ जाने के 3-4 महीने बाद वो कहते हैं बॉस चीखें निकल गई हैं. अच्छा, क्यों, क्या हुआ? वो पैसे तो पूरे हो गए लेकिन कपड़े नहीं धोए जाते और बाथरूम नहीं साफ होता. तो कहते हैं अच्छा ठीक है वापस आ जाओ. अच्छा, वो उनका साइकिल है, राइट? सो वो उस पूरे साइकिल से भी गुजरेंगे. बट फॉर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स वी इनकरेज देम. वी आर डूइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विथ यूनिवर्सिटीज. Wali has a piece with Nust. We have, as Activate, we have it with Zabist and with Ziauddin University. Okay. And we pick up their fresh graduates and we train them, and then this is a cycle that they follow. What's in it for you? Look, let them get what they need to do, what they need to get, right? It's a much bigger pace. I mean, the number of people that we are now churning out through this program and the number of new customers that we are picking up in Europe is insane. How do you pick up those customers in Europe? How does that... These are people who pick up, so वो Upwork से लेते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं बस हम यहाँ से काम करा लो. फिर वो खुद ही जाके कहते हैं कि वो मैंने एजेंसी से काम कराया था, उनके साथ डायरेक्टली काम करना है because you get a wider variety of work. I say, okay, why don't we do that? So it just starts getting introduced. Fascinating. Right? And it's an interesting model. अच्छा, इस मॉडल की खूबसूरती है, इस मॉडल की खूबसूरती ये है कि ये इसलिए नहीं बना था कि मुझे पैसे बनाने. ठीक है, ये इसलिए नहीं बना था. ये इसलिए बना था कि यार हमारे पास इतना क्रिएटिव बच्चा है, हमने उस बच्चे को दुनिया को बताया ही नहीं कि हमारे पास इतना क्रिएटिव बच्चा है. We started working with Publicis last year in April, right? With a team of 11 people. And we kept training. Today, we employ about 150 people for Publicis. Okay. And they love us. Achha. Publicis, कि यार तुम मतलब you have a model which we have not been able to implement. How do you motivate your team? How do you retain your team? This is a question I am responding to Publicis in the Middle East. How do you... And the answer is very simple. Stop thinking about the bottom line. Just reinvest. Reinvest in the people. Over a period of time, your numbers will become large enough that everybody will start to make money. And when you say reinvest in the team, do you mean by... Bring in more people. Bring in more people, or do you mean pay them more salaries? Do you pay like over Both. market? Okay. Both. Okay. And in that scenario, how does one decide? So for example, now I'm so curious about this. Is your cycle of hiring very stringent? Look, misal ke taur pe, it's famous that Google, or for example, other companies in Silicon Valley, they have a 6-month, 12-month year period to sort of get into the organization, and all sorts of weird questions like how much does this room weigh and stuff like that. How do you, so when you pick up talent, how do you know that this kid is super creative? We don't. We don't. Okay. Because even after doing whatever Google has done in terms of hiring their people, let me ask you one question. What new innovation has Google done through its own team other than buying companies? Other than their in the last 5 search. years. Yeah, everything is bought. Right?
सो उतनी स्ट्रिंजेंट हायरिंग के बाद भी आपने सिर्फ मॉनिटर्स ही खरीदे हैं ना, जो जाके चेक कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं कि यार दुनिया में कौन अच्छा काम कर रहा है उसको खरीद लो, या ये इंश्योर करो कि जो ऑपरेशनली हम इतने साउंड हैं कि हमारी सर्च में या हमारी कंटेंट क्रिएशन के अंदर कोई गड़बड़ नहीं हो रही. यही कर रहे हैं ना. इन्वेंशन तो कोई नहीं की. It's not a small task, but it's not. इन्वेंशन तो कोई नहीं की. सो आपने बेसिकली मॉनिटर्स ट्रेन किए हैं ना उस पूरे प्रोसेस के थ्रू. ठीक है. और मैं ये कह रहा हूँ कि यार मसला ये है बहुत सिंपल सा, कि आप जिस ह्यूमन को जज कर रहे हैं ना कि मैं इसको नौकरी दूं या ना दूं, वो आप आज जज कर रहे हैं. राइट. दैट ह्यूमन is going to, because he or she is a human, will continue to evolve, and their pace of evolution is going to be faster than yours as a person who's taking a decision to hire people, right? Yeah. So how can you judge कि ये बंदा अच्छा है या ये बंदा बुरा है, right? अच्छा, प्लस अगर मैं उस बंदे को आज इंटरव्यू करूं और मैं आज सुबह अपनी बीवी से लड़ के आया हूं, मर गया वो तो बेचारा, right? So it's not just about that individual, it's also about Me. the interviewer, बिल्कुल. right? So how do we pick these people? We offer a last semester program for which they come through a test, and that's an expense we make to get those 15, 20, 25 people enrolled into that. So one, they have a choice of enrolling in it. Once they finish, everybody doesn't join. Some people go out. So let's say 65% join. ठीक है. They start to get formally trained. That training finishes, then again they have an option that they can leave right there if they found a job, or they can continue working with us and do whatever else they're doing. Right? So all we're trying to do is just expand the base as much as we can and just keep training people in the process. अच्छा, यही लोग बोर हो जाते हैं. सो वो 4 महीने बाद आएगा, बॉस मैं बोर हो गया. अरे भाई अभी तो तूने काम शुरू किया था यार, मतलब बोर हो गया, व्हाट द हेल. सो वी ऑल्सो हैव अ रोटेशन प्रोग्राम. So we keep replacing or switching places between the team that works with our local customers And international. and What's the, if you don't mind me asking, what's like just a percentage split of local and international now in terms of your business? So what percentage of them are? मैंने हमारा local business बहुत बड़ा है भाई. So अभी international is relatively, yeah. अच्छा, in terms of, you just mentioned Google and their model. Are you at a stage now where you look at that model for yourselves, where एक तो there is training and having a fantastic team and growing them, लेकिन दूसरा इसमें फिर ये आ जाता है कि यार अच्छा I need to monitor is the word I think आपने इस्तेमाल किया कि यार अच्छा मैंने इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है. Is that where you are now, where you're looking to purchase certain entities you think are of value? I am very selective. Okay. देखो इस इंडस्ट्री में अगर मुझे कोई ऐसी या मेरी टीम को कोई ऐसी चीज नजर आ जाए, सो वी डू हैव स्काउट्स, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट, राइट, बट इन द लास्ट 3 years इन द लोकल मार्केट हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐसा नजर आया जिसमें हमने इन्वेस्ट किया. क्यों? Is it just because there's not quality out there? Yeah. यार इट्स आइदर नॉट क्वालिटी. देखो हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा पीस मिसिंग है ना, वो है मेंटोरिंग. बच्चा जब ओ लेवल्स में जा रहा होता है या उस स्पेस में जा रहा होता है, बिल्कुल, एट द एज ऑफ 13-14, राइट, दैट इज वेयर मेंटोरिंग नीड्स टू स्टार्ट. नहीं होती. ठीक. उसके बाद वो सोचता है कि अच्छा मैं कौन से सब्जेक्ट्स लूँ, फिर मेंटोरिंग नहीं होती.
फिर वो सोचता है मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, फिर मेंटोरिंग नहीं होती। मैं करियर में क्या करूँ, फिर मेंटोरिंग नहीं होती। इफ़ आई वांट टू बिकम अ स्टार्टअप, कोई मेंटोरिंग नहीं होती। अभी रिसेंटली कुछ थोड़ा थोड़ा फॉर्मलाइज होना शुरू हुआ है। देखो, जहारा वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कंपनी है भाई, ये 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, बिल्कुल, एक से कुछ नहीं होगा। उसके अलावा हैं 2-3, लेकिन उनका फिर उनकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। सो जितनी वो मसला ये कि मेंटोरिंग इन इटसेल्फ, इफ टुमारो लेट्स से यू वर टू डिसाइड कि यार लेट मी क्रिएट मेंटोर्स, राइट, एंड यू स्टार्ट ट्रेनिंग पीपल हाउ टू बिकम अ मेंटोर, the damn thing will become an industry in itself. Do you realize that? क्योंकि I was going to say that as well. The problem is not just एक होता है ना कि I can do something. So जिस तरह let's say एक अच्छा cricketer doesn't necessarily mean कि वो एक अच्छा cricket coach बनेगा. A lot of the times, you know, genius का सबसे बड़ा मसला ये होता है, even they are unable to decipher how they did it. They just know कि, you know, I've met some extraordinary people, but I don't think even they can verbally communicate कि वो करते कैसे हैं, you know, they just, वो उनके लिए एक instinct होता है, they can do it, वो तो कोई शक नहीं है, लेकिन they can't reproduce it or tell you how to reproduce it. And which is why I'm saying कि देखो, या तो कोई इतना चीता बच्चा होता who would have been able to come through, या हमने उसको स्काउट कर लिया होता, मतलब कोई चीज तो आई मार्केट में नजर आ जाती ना, नहीं आई है, ठीक है। सो विच इज वाई इवन दो वी आर ओपन, मतलब एज इन यूर सिटिंग हियर विद अ चेकबुक रेडी, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा। वाओ, ओके, राइट। सो वो मेरा थोड़ा सा पेन पॉइंट भी है, मतलब व्हाई डू स्टिल, सो व्हेन आई ट्रेन माय पीपल और व्हेन आई स्पीक विद माय पीपल, उनको मैं बहुत सिंपली ये कहता हूँ कि यार देखो, बड़े होके become a better version of yourself. Don't try and become anybody else. ठीक है। सो प्लीज ये कहना बंद कर दो कि मैं बड़ा होकर रेहान मर्चेंट बनूंगा, नहीं बनना, अल्लाह के वास्ते नहीं बनना, ठीक है, क्योंकि रेहान मर्चेंट को पता है कि रेहान मर्चेंट कितना मुश्किल आदमी है। सो प्लीज इतने मुश्किल आदमी ना बनो, ठीक है। बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हाउ डज दैट पर्सन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट? व्हाट आर द ट्रेट्स? somebody needs to sit down and help them with it. बिल्कुल। And let's talk about Raihan Merchant for a second. When your journey started, why did you pick this industry? What did you know about this industry? आपने बात की mentors की, आपके कोई mentors थे? How did you sort of, and जो आपकी sort of journey है, how much of that, मतलब मैं बहुत सारे guests से सवाल पूछता हूँ कि of course there is mehnat, there is vision, there is consistency. Do you think there is an element of kismat as well? कि you know, वो जिसको you know, पुराने ज़माने में you know, destiny कही जाती थी या अभी भी कही जाती है, and what are the biggest takeaways, like when you went into that industry, how did that start, and who were your mentors? देखो, सो जो आंसर मैं अभी देने लगा हूँ ना, वो लोग कहेंगे यार ये पागल है, क्या बकवास कर रहा है, राइट? बट आई ग्रेजुएटेड आउट ऑफ IBA इन December of 1990. बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मेरे जो क्लासमेट्स थे, दे गॉट जॉब्स इन कैलटेक्स, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सो ऑन सो फॉर्थ। IBA was premium, is premium, yeah. यार इतनी मेहनत नहीं करनी रहा साहब। सो आई वेंट एंड अप्लाइड टू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी कि यहाँ मैं अंधों में काना आ जाऊँ, एंड आई गॉट द जॉब because I had come from IBA. So I was the lazy bugger who chose to go into an agency because competition ही नहीं है। Big fish in a small pond. हाँ, मतलब कोई बंदा MIT से पढ़ के पाकिस्तान वापस आए, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी नहीं करेगा, ठीक है। सो मेरा वो कंपटीशन ही नहीं है। सो दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। The first person that I started working with, his name was Fali Homi Panthaki, FH Panthaki. And I will never forget that one statement he made to me. He said, listen, you are getting into the advertising business.
दिमाग में आइडिया आने का टाइम नहीं होता. What do you mean? So you could be sleeping and 2 a.m. it pops up. What will you do? I said, I'll go back to sleep. Exactly. So he said, keep a notebook and a pen with you always. इससे बेहतर एडवाइस इन 1990 मुझे शायद कोई नहीं दे सकता था. Then I worked with Tahir for 5 years. Right? And the beauty, and I had two bosses over there. One gentleman passed away, Faiz Nabi. Jameel Sayyid still runs the PAA secretariat. And the advantage of working with them was that they would not stop me from anything. ठीक, मैं बच्चा हूँ यार, मतलब मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो मैं गलती करूँगा. Right? And if they're allowing me to go and do it, और मैंने कोई मेजर गलती कर दी तो पड़ेगी तो उन बेचारों के सर पे. So they had the courage and they instilled that courage in me. कि यार, let them do it. So even if somebody is reporting to you, let them do it. उसका एडवांटेज क्या है? Today, well, for a while, I tell my management team to fail, but fail fast. And learn. Obviously. That's right. The objective, yeah. Fear क्या है? कि यार मैं फेल हो जाऊंगा. फेल हो जाऊंगा उसकी एक कॉस्ट है. ठीक है, लेकिन अगर आपका बॉस आपसे आके कह रहा है कि भाई गो फेल, what are you going to do? Right? That fear is gone. And when did you decide to sort of venture out into your own thing, and why? After 5 years, because Tahir couldn't move. He was the owner. How are your terms with Tahir Sahab now? I can still go to his house and have a conversation with him and do whatever I can. Do you get to that stage now with people where, you know, at the end of the day, Raihan bhai to kahin nahi ja sakte, so we have to sort of go into our own? No, so I've done that multiple times. Okay, and so you have to have a lot of patience, and you have to have that ability to say कि मुझे इससे ज्यादा पैसे नहीं बनाने. Right? So 2013 installed Farhan Qureshi as the CEO of Brainchild, and I walked away. I was living in the UAE. I set up Bangladesh operation. I set up a Sri Lankan operation. I set up a Myanmar operation. उससे एडवांटेज क्या हुआ? मुझे टाइम मिल गया कुछ और करने का. फरहान ने एजेंसी मैनेज कर ली. बाकी टीम को ये लगा कि यार मैं सीईओ बन सकता हूँ. It showed them a pathway. Right? So आपने मुझे अभी जब इंट्रोड्यूस किया तो आपने कहा CEO ऑफ Z2C, but he is chairman of Brainchild and Blitz. What is the message? कि CEO की पोजीशन खाली है भाई, मैं सिर्फ बोर्ड पे हूँ. यार खाली होती है, as in, yeah, there's always going to be space. लोग आएंगे जाएंगे. So लोग आए हैं और लोग गए हैं. So जब कोई नया बंदा आता है उसको सीखने में टाइम लगता है, वो गलतियां करता है. So अगर मैं एक तरफ उससे कह रहा हूँ fail fast, he fails, the company loses money, I can't turn around and say you fired, or I can't turn around and say make me the money. Yeah. Acha, I won't take up a lot more of your time. I just have one or two last questions. एक तो ये है कि you seem like a person जो आपने और बहुत डिटेल में आपने बात की कि यार पैसा is not everything. ठीक है, एक बंदे की purpose या philosophy होती है, and only if you have that sort of philosophy can पैसा not be everything. Otherwise, why reinvest? आप अपने पैसे बनाओ और आप जाओ, right? What is not your organization or your group? What is your purpose? What do you think is your
reason for doing all of this? Because it's not just money, is it? No, look. So if I use a cliched term of giving back, right? I'm still going to call it a cliched term. But the purpose is much bigger than giving back. The purpose is that we as a country have all the resources that we need. But we as a nation somehow forgot that we have such a beautiful country. And so we've been looking outside, we've been looking elsewhere, we've been killing each other, monkey see, monkey do. And I am in the communications industry, right? If I can convince people or content creators to create content which helps people rediscover their love for this country, then I would have done my job. Right? अब ये इतना बड़ा पर्पस है कि ये मुझे भी पता है कि ये पूरा नहीं होगा, उससे पहले मैं मर जाऊंगा. That's a good purpose. But that's isn't a it? purpose. That's the real purpose. Yeah. That's a very beautiful purpose in itself. Tell last question, and then I'll let you go. A little lighter note. What's the most fun you've ever had on any campaign or anything you've done? So we mentioned, Coke Studio and PSL and all of these big things. आपने I think copycat said 4.5 hours किया था. Theater भी हो सकता है. But forget. It doesn't matter revenue, impact. I just mean fun. Like you were a creative or you the CEO at the time or the chairman. What's something you did you were like, yaar, bada maza aaya? So 2015, we were trying to train teachers to do mind mapping. ठीक है. And the gentleman who created the concept of mind making was somebody called Tony Buzan. So we brought Tony to Karachi and we did a session for about 800 plus teachers ठीक है. from TCF schools, Beria schools, some other schools. Tony बोल रहा था because he was the creator of the mind map. और लोग सुन रहे थे. अच्छा, टोनी अंग्रेजी में बोल रहा था. ये टीचर्स जिस किस्म के स्कूल से आए थे, English was not their first language, yeah. Right. So after the first, I think 75 minutes, okay, यार ये ऐसे नहीं होगा. Right. So I took a mic. I jumped, pushed, got Tony to sit somewhere else. उनके यार पीछे जो लोग बैठे हैं ना, वो उठ के आगे टोनी को स्टेज से उतार दिया. स्टेज से उतार. पीछे जो लोग बैठे हुए थे उनसे मैंने कहा यार ऊपर आके स्टेज पे बैठ जाओ. सो बीच में एक सर्कल बन गया ऑटोमेटिकली जिसमें टोनी था, मैं था और मेरे साथ एक और साहब थे, तारिक कुरैशी. तारिक ऑल्सो अंडरस्टूड उर्दू. सो हम अब टोनी से कहें कि अच्छा तू अगली बात कर, और फिर तारिक और मैं उसे ट्रांसलेट करें और फिर लोगों को एंगेज करें कि तुम्हें समझ आई नहीं आई. बिल्कुल बिल्कुल. एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइजेस व्हिच वर नॉट इवन प्लान्ड. राइट, कि अच्छा आप पेपर ले लें, उस पर इसका माइंड मैप बना लें. It became so much fun because at the end of it we put like a 30 feet by 40 feet white sheet and we gave everybody colored markers and said go make your mind map. And you had like 800 teachers, ठीक है, जिनको ट्रेन इस बात पे किया गया है कि तुम तो क्लास में सीधे खड़े हो गए. राइट. They were sitting literally on their haunches on the floor with a set of markers, pulling one from each other, making their own mind maps. That is the most fun I have had ever in my life. And it was a life-changing experience for them. That's impact. Yeah. And it was brilliant. चलें, I think that's a great place to leave it. Thank you so much for being on the podcast. बहुत कुछ सीखने को मिला. And thank you guys for watching. If you enjoy our content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.